And good morning children, welcome to Phoenix International Group of Schools. I hope you all are fine and doing well, and I hope you all are studying at home also, right students? As you know children, what is this? Yes, this is the Environmental Studies textbook of 5th class, right? So children, let's start our lesson. In our last lesson already we have studied, right children? Our family and culture, values, etc. All these things we have seen. Okay, and we have seen in our last lesson that every person in the family is unique because of some different characters, uncommon characters, right children? So now, can you read our lesson name? Today's lesson. Our today's lesson is our internal organs and the functions. What is the lesson name children? Our internal organs and their functions. It means हमारे internal organs and उनके functions. Okay. Now children, what do you mean by internal organs? Internal organs किसको बोलेंगे हम? Can you tell me? Can anybody tell? Okay. I'll tell you, internal organs means the organs which are located in our body. Okay, the organs which are located inside our body. ऐसे organs जो हमारे body के अंदर present होना, उसको हम बोलेंगे internal organs. And their functions meaning, and उनके क्या काम है, उनका function जो होता है. Okay, so here in this lesson you are going to learn about that only, some of the internal organs and their functions. Okay children. Can you name some internal organs? Can you name some internal organ? Right, brain, heart, lungs, kidney, liver. All these names are the examples of what? Internal organs. Okay children. So now keep your finger on our first line. There are many organs inside our body. There are many organs inside our body. Children, ऐसे बहुत सारे organ present है कहाँ पर? हमारे body में, inside our body में. These organs are called internal organs. And ऐसे organ जो body के अंदर present होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? Internal organs बोलते हैं. Right children? Many internal organs together make an organ system. Many internal organ make what? Together make an organ system. And बहुत सारे organs एक जगह मिलकर क्या बनाते हैं children? They make what? Organ system. What they make? Organ system. I'll tell you one thing children, if we have only one particular cell, what? Organ system किस तरह से बन रहा है? Organ system किस तरह से बन रहा है? Okay, we will have one cell. अगर एक जब रहेगा तब हम उसको क्या बोलेंगे? Cell बोलेंगे. Okay children. When all the cells combine together, so what they will make children? They will make what? They will make tissue. What they will make? They will make tissue. And when so many patches of the tissue combine, so वो क्या बनाते हैं? Organ. And जब बहुत सारे organ join हो जाते हैं, then it is called organ system. Okay, I will draw and I'll show you also. See children, this is what? This is single one. It is called cell. What it is called? It is called cell children. Okay, जब ऐसे ही बहुत सारे cell combine हो जाते हैं तो तब क्या बनाते हैं वो? This is called tissue. What we are saying? This is called tissue. हम इसको tissue बोल रहे हैं children. Okay. Now what I said you? When it is single, it is called cell, right? It is called cell. When number of cells are joining, then we are saying what? We are saying tissue. Okay. When number of tissues are joining, then it is called what? Then it is called organ. Then it is called organ. When number of organs are joining, then it is called organ system. Then it is called organ system. So are you understanding children? When we have a single, that is called cell. When number of cells, जब बहुत सारे सेल एक जगह जमा हो जाते हैं तो हम उसको टिश्यू बोलेंगे. पूरे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं. ओके. एंड बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं. एंड बहुत सारे ऑर्गन्स कंबाइनली व्हाट दे विल मेक? दे विल मेक व्हाट? ऑर्गन system. Okay, these organs are helpful in carrying out various functions of the body. So now here what is? These organ systems are helpful in carrying out various functions of the body. एंड यही ऑर्गन सिस्टम क्या करते हैं? हमको हमारी
हेल्प करते हैं कई सारे हमारे बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने में. ओके, नाउ वी विल सी. I think you have already studied in your lower section 1 or 2 organ systems, right children? Now here we have some number of organ systems. Let's read here. The main organ systems in our body are, body में जो main organ systems है उसके names नीचे दिए गए हैं. Okay, we will read that. Read first one. What is the first one? Skeletal system. Which system children? Skeletal system. नाउ यू सी स्मॉल सेल जो था वो एक क्या बनाया है यहाँ पर, टिश्यू बनाया है. टिश्यू से क्या बना कि बोन्स बने, एंड बहुत सारे बोन्स कंबाइन होकर यहाँ क्या बना रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम बना रहे हैं. ओके चिल्ड्रन, स्केलेटल सिस्टम किसको बोलेंगे? एज यू नो दैट इन अवर बॉडी देयर आर टोटल नंबर 206 नंबर ऑफ बोन्स, राइट चिल्ड्रन? So that all bones are joined with each other, right? All the bones are joined with each other, and what they all are making? They are making combinedly skeletal system they are making. Okay, so this is one skeletal system is also a organ system. Skeletal system. Second is muscular system. Third one circulatory system. Fourth nervous system. Fifth respiratory system. Sixth digestive system. Seventh excretory system. Eighth reproductive system. Okay children, so today what we are going to do, we are going to see here what is the meaning of skeletal system. What we are going to learn, we are going to learn कि skeletal system actually है क्या. So what I said you children, पूरे bones जब combinedly कुछ बना रहे हैं यहाँ पर, what they are making, they are making skeleton, right children? So that is called the skeletal system. In these skeletal system what we are going to learn, we are going to learn about the bones. हम bones पढ़ेंगे कि कौन सी bone कहाँ पर present है and कितने bones कहाँ पर present है, total number of bones कितने हैं, that we will see. Okay students, let's start reading. Our body consists of about 206 bones of different shapes and sizes. एंड हमारा यहाँ पर व्हाट इज सेइंग है, बॉडी कंसिस्ट ऑफ, टोटल हमारे बॉडी में 206 बोन प्रेजेंट है एंड दैट बोन्स आर डिफरेंट शेप. सबका एक अलग अलग शेप है एंड डिफरेंट साइज है. एज यू नो दैट सपोज इफ यू टेक अवर फिंगर ऑल्सो, इन दिस फिंगर behind these muscles what we have, bone only, right? So the size of this finger is this much only. So the bone size of the bone is this much, right? If you take your nose, the bone is present, so this is also size of the bone is this much. If you take a thigh bone, the size of the thigh is little bit long, right? So as per the bone, sizes are different children, okay, and shapes are also different. These bones together make the skeletal system, and ये सारे bones मिलकर क्या बनाते हैं, skeletal system बना रहे हैं. Bones are very important as they provide a particular shape to the body, and bones क्या है, बहुत ज़्यादा important है because bone क्या कर रहा है कि हमारे body को एक shape दे रहा है. They protect the important organs like heart, lungs, brain, and also provides strong support to the मसल्स. नाउ दे प्रोटेक्ट, बोन्स किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन, जो इंटरनल ऑर्गन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, जैसे हार्ट, लंग्स, स्पेशली या ब्रेन एंड वॉट एवर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स जो प्रेजेंट है, उन सबको क्या कर रहे हैं, बोन्स कवर कर रहे हैं, ऊपर से पूरे बोन्स कवर कर रहे हैं. एंड दीज इंटरनल ऑर्गन्स आर इनसाइड आवर बोन्स चिल्ड्रन, ओके, एंड इवन दे सपोर्ट्स टू आवर मसल्स ऑल्सो. The human skeletal system consists of the skull, backbone, ribs, limbs and the breastbone. Okay children, so the human skeletal system किन चीज़ों से बना हुआ है, जब ये सारी चीज़ें एक जगह कंबाइन हो गई, इन सब से हमारा skeletal system बना है. What are that thing? First one is skull. Skull. What is skull children? Skull is a kind of a hard bone. Skull क्या है children? एक बहुत ही hard bone है जो हमारे brain को ऊपर से protect करता है, okay? And our backbone also, with the help of our backbone only we are able to stand and we are able to sit children, okay? And ribs, जो ribs होते हैं ना हमारे, okay? Ribs in the sense जो पूरे पसलियाँ and all होते हैं, that ribs 12 pairs will be there, that called. And limbs, okay, our hands and our legs and breast bone children, all these bones are collectively what they are making, they are making skeletal system. ये सारे bones मिलकर skeletal system बना रहे हैं.
नाउ ह्यूमन स्कल कंसिस्ट ऑफ 8 फ्लैट बोन्स. नाउ जो हमारा स्कल है ना चिल्ड्रन, उसमें टोटल कितने बोन्स है? व्हाट ही सेइंग हियर? ही सेइंग दैट वी हैव टोटल 8 फ्लैट बोन्स वी हैव. These bones are interlocked to one another. एंड ये बोन्स क्या है चिल्ड्रन? दिस बोन्स आर इंटरलॉक्ड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये 8 बोन्स. स्कल बोन. ओके चिल्ड्रन. The skull protect the brain, ears and eyes. Now what the skull is doing? Skull is protecting what? Our brain and our ears and even our eyes also. This whole inside, this is called skull children. Okay, the bones. The backbone consists of 33 bones and whatever the backbone will be there no children, जो backbone होती है वो total 33 bones से बना हुआ है. It protects the spinal cord and supports the हेड एंड ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है एंड इवन जो हमारा हेड है वो हेड को भी सपोर्ट कर रहा है. द बैकबोन इज अटैच टू द स्कल. नाउ बैकबोन किससे अटैच्ड है चिल्ड्रन? बैक साइडली, फ्रॉम द बैक साइड इट इज अटैच टू आवर दैट इज स्कल चिल्ड्रन. ओके. द रिप कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स एंड रिप्स के कितने पेयर्स होते हैं चिल्ड्रन? रिप्स के टोटल 12 पेयर्स होते हैं. यू माइट हैव सीन इन सम डायग्राम्स these lines will be there, right? So rips will be present that have total 12 pairs of curve bones. and वो कौन से टाइप के बोन्स होते हैं? curve bones होते हैं. These ribs form the rib cage and protect the heart and the lungs. and what these ribs are doing? These ribs are protecting the heart, right children? what they are doing? These ribs are protecting the heart. ये रिब्स के अंदर ही जो है हार्ट प्रेजेंट होता है. द इंटरनल ऑर्गन हार्ट इज़ प्रेजेंट एंड इसके ऊपर से पूरे बोन्स जो है एज ए रिब्स की तरह उसको कवर कर रहे हैं. ओके. हार्ट एज वेल एज इट प्रोटेक्ट्स टू द लंग्स ऑल्सो, वो लंग्स को भी प्रोटेक्ट करता है. द रिब्स आर ज्वाइन टू दी ब्रेस्ट बोन एंड दी बैक बोन. दिस रिब्स, अब वो ज्वाइन कहाँ से है? वेयर इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट? वो पीछे से अपने बैक बोन को अटैच्ड है रिब्स और सामने से अपने ब्रेस्ट बोन को अटैच्ड हैं. सो दे आर मेकिंग अ कर्व बोन लाइक दिस चिल्ड्रन. ओके. दे आर मेकिंग अ कर्व बोन. बैक साइडली दे आर अटैच्ड टू द बैक बोन and front side they are attached to the our rib cage. Okay, that is our breast bone. The bones of limbs are help in doing various activities like writing, catching, walking and running etc. अब जब बोन्स हमारे लिम्स के हैं, हम लिम्स किसको बोलेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स? कैन यू टेल मी? लिम्स, limbs meaning our hands, 4 hands and our legs children. Okay, our hands and legs, this combinedly called limbs we will say. Okay children. So the bones, ये जो bones है हमारे hands and legs के, ये limbs के, how they are helping us? They are helping us in writing, catching, walking, running. लिखने के लिए, कुछ चीज़ कैच करने के लिए, what we are using? We are using the bones of our hand only, right? Our limbs bone. And walking, चलने के लिए, and for running, भागने के लिए, which part of the body is helping? Obviously the bones of our what? Our limbs, our hands and legs. Did you understand children? Right. So what do you mean by the internal organs? Internal organ means the organs which are located inside our body. जो body के अंदर रहते हैं हम उसको बोल रहे हैं internal organ. Okay. What are the main organ system we have? We have total 8 organ system: skeletal system, muscular system, circulatory system, nervous system, respiratory, digestive, excretory and reproductive system. Okay children. And among that today which system we have learned? We have learned skeletal system पढ़े हैं हम लोग. And skeletal system meaning जब पूरे सारे bones combine होकर जो एक system बनाते हैं उसको हम बोल रहे हैं skeletal system. Okay. So from where we are starting? From the skull, right? स्कल कितने बोन से कंसिस्ट है चिल्ड्रन? स्कल में टोटल 8 बोन्स होते हैं. ओके. एंड स्कल किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? ब्रेन को, ईयर को और अपने आइज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है. ओके. बैकबोन में टोटल कितने बोन्स है? 33 बोन्स है. ओके. एंड वो किसको सपोर्ट कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड को और अपने हेड को सपोर्ट करता है. ओके. रिप्स जो हैं वो 12 पेयर्स के हैं, वो पीछे से बैकबोन को अटैच्ड है एंड सामने से ब्रेस्ट बोन को अटैच्ड होते हैं. टोटल हाउ मेनी? 12 पेयर. पेयर बोल रहा है, पेयर में 2 बोन्स होते हैं चिल्ड्रन. ओके. सो 12 इंटू 2 दैट इज़ नथिंग बट 24 टोटल. ओके. एंड द बोन्स ऑफ लिम्स आर हेल्प इन वॉट? द बोन्स ऑफ आवर हैंड्स आर हेल्पिंग अस टू राइट, कैच एक्सेट्रा. एंड द बोन्स ऑफ आवर legs they are helping us to walk and to run children. Okay. I hope you all have understood our today's topic skeletal system.
and make sure that you should revise this at your home once again, and especially you have to go through with the spellings also, children. Okay, now it's time to take our homework. See, what homework? Write any 5 organ system of our body. It is very easy, right children? As already all these things I have mentioned in our reader. सारी चीज़ें अपने reader में हैं, ये टेक्स्ट बुक में. Write any 5 organ system. आपको किसी 5 organ system के name लिखना है. Total we have 8, right student? But in homework we have to do only 5. What is our first one? Respiratory system, excretory system, muscular system, digestive system, and skeletal system. Okay, among these, which one we have finished today? Yes, 5th one, skeletal system. Good. Make sure that you complete my homework before the class, and I hope you all are attending the classes regularly. Don't miss our class, students. Okay, inshallah I'll be back with the next video. Till then, take care and have a nice day, everyone.